आशीष, आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये? So it would be my third means. ओके, वन सेकेंड. ओके आशीष, सो दिस इज योर आंसर शीट. आशीष, यार ओके ना? आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है? आशीष, आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये? So yes, sir, I'm okay. ओके, दिस इज योर वन सेकेंड. ओके, सेंसुअलिटी इज द स्लॉटर हाउस ऑफ ह्यूमैनिटी, का टॉपिक था आपका. Sensuality is the slaughterhouse of humanity. Few years ago, a shocking act was uncovered in UK. It is the story of a 16-year-old girl who was playing an online game using her virtual reality tools. She was just a teenager minding her own business, lost in a digital world that promised escape. ये मुझे अच्छा नहीं, फ्रेज कुछ और होता है यहाँ पे तो अच्छा रहता. ये नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ होता है फ्रेज. But that world soon turned into a nightmare when a group of strangers invaded her personal space, not physically but digitally. Her avatar, a visual representation of herself, was subjected to a horrific act of violence, a digital gang rape. In the realm of zeros and ones, a young girl was violated. Okay, fine. थोड़ा सा इसको यहाँ पे शुरू इंडेंटेशन दिया करो, especially the opening paragraph. Okay, example is fine. Let us turn to another story from Chhattisgarh, India. A man named Neelu Nagesh abducted a 9-year-old girl and subjected her to rape until she succumbed to death. But even her death could not free her from the act of violence. Her dignity was violated even after her death. This horrendous act was so unthinkable that we do not even have a criminal law against it. The above two incidents are manifestations of receding humanity in the wake of overpowering sensuality. This situation can be described through the following lines of the poem The Second Coming, written by W.B. Yeats. Turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falcon. Wonderful. The human mind, falcon, is getting so overwhelmed by sensual desires that it can no longer hear the inner voice, falconer. Yeah, you could simply say the human desires. Falcon could be compared to desires also. Consequently, the basic values such as love, care, compassion, and empathy, which allow us to experience and embrace humanity, go for a toss, making our existence animalistic. Completely surrendering ourselves to sensual pleasures may not necessarily lead to acts like rape or necrophilia, but it can have various other negative consequences at an individual level. Okay. For a child who is supposed to harbor innocence and experience the joy of the world in a pure and unfiltered way, their mind can get corrupted by overindulgence in physical or sexual forms of pleasure. The incidents of locker room, where students of class 11th and 12th created an Instagram group solely for the purpose of sharing sexually explicit content, is an illustration of the same. Overindulgence in sensory pleasure can also hinder formation of meaningful human relationships in life. In this era of hyper-sexualized world, intimacy is often equated with physical acts of love, leaving less room for deep emotional connections. Such acts of care, such as preparing food for a partner or giving daily reminders for medicines, are not often appreciated or romanticized. The uncontrolled pursuit of sensual pleasures lead to acts such as extramarital affairs or adultery, shattering a healthy relationship into ruins. अच्छे जा रहे हो आशीष? ठीक है, ठीक, अच्छा लग रहा है ऐसे आपका अभी तक सोफा. Thank तो you so much. अननेसेसरी मैं कहीं पे मॉडिफिकेशन रिकमेंड नहीं करूंगा जहाँ पे ज़रूरत नहीं हो. ठीक है, जो चीज़ ठीक जा रही है, वर्किंग है, तो लेट इट बी. दैट्स माय फिलॉसफी. तो अभी अच्छा लिखा आपने सोफा. थोड़ा द इविल ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज ऑल्सो लिंक्ड टू सेंसुअलिटी एज. अच्छा देखो, ये जो वर्ड लिखा है ना, इज ऑल्सो, ठीक है, थोड़ा सा पे फोकस करना. इज ऑल्सो लिंक्ड टू सेंसुअलिटी एज अ perpetual drives psychological pressure by asserting power and control over their partner. Both yes and no.
कोई कह सकता है शायद ऐसा नहीं है, फैक्चुअली हो सकता है आपका इंटरप्रिटेशन गलत हो। आप यहाँ पे थोड़ा सा डिटर्मिनिस्टिक हो जाया करो, डिटर्मिनिस्टिक कम May. हुआ करो, मे Yes. कर लिया करो। Yes. ये छोटा सा वर्ड जो है, फिर कोई भी आपको डिसएग्री नहीं कर सकता कि पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर। मे या फिर माइट यूज कर लिया करो इसकी जगह, तो डोंट बी सो डिटर्मिनिस्टिक। Sometimes it goes to the extent of using physical and sexual intimacy, which is supposed to strengthen marriage. Sometimes it goes to the extent of using physical and sexual intimacy, which is supposed to strengthen marriage as a tool of coercion and abuse, resulting in marital rape. I can understand what you're saying, but थोड़ा आपने उसे ठीक से put नहीं किया. It goes to the extent of using या misusing होगा ना, misusing. देखो, let me draw your attention to a little bit of grammar here. Yes. मुझे थोड़ा सा एफर्ट लगाने पड़े आपकी बात को समझने के लिए। क्यों लगाने पड़े? थोड़ा इट्स वेरी थोड़े बारीक चीज़ है यहाँ पे। अगर बाकी लोग भी हों तो तुम लोग भी सुन लो, बाकी लोग भी। आपने यहाँ पे टेंस एक ही रखा है। अगर यहाँ पे टेंस अलग होता तो चीज़ समझने में ईजी होती। आप क्या कहना चाह रहे हो? आई विल डेमोन्स्ट्रेट दैट। समटाइम्स इट गोज टू द एक्सटेंट ऑफ यूजिंग फिजिकल एंड सेक्सुअल इंटीमेसी विच वॉज की इज की जगह अगर होता विच वॉज सपोज, which was supposed to strengthen marriage as a tool of coercion and abuse resulting in marital rape. तो थोड़ा सा ना टेंस को आप और फाइन ट्यून कर दोगे। अगर यहाँ पे प्रेजेंट और here we have made a difference between present and future, present and past. If you're talking about the past only, then if you can use both the tenses present perfect and present perfect present perfect and simple, sorry, simple past and past perfect. If you know about these nitty-gritties of tenses, तो इन दोनों को अगर आप ठीक से यूज़ करोगे तब मैसेज और इजीली क्लियर होगा। ज़रूरत हुई तो मैं ये हाई स्कूल वाली लेक्चर भी ले लूँगा एक दिन कभी अलग से, आपका और बाकी लोगों का, ठीक है? टेंस इससे मीनिंग में बहुत क्लियर हो जाता है। Yes, ज़रूरत sir. आप लोग देख लेना, अगर ज़रूरत हुई तो मैं एक बार आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगा इसका। दिस टर्न्स मैरिज फ्रॉम ए सेफ हेवन टू ए स्लॉटर हाउस फॉर द विक्टिम। दिस टर्न सेफ हेवन या पैराडाइज, ठीक है, पैराडाइज टू ए स्लॉटर हाउस। But what are the driving forces which are leading to overemphasis or overindulgence in sensory pleasures? In the recent times, media has significantly impacted our mental diet. Impacted क्या कर रहे हो ना? Yes, sorry, I'm interrupting. I just wanted to ask, like in this paragraph, I have started with but. Is it is it the correct way to begin a counter or a different idea from what we have been discussing in the previous paragraphs? See, in the yesterday session, I said that but should be used when there is a discontinuity. Okay, this is what I had said. But having said that, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे गलत लगा। इंटरेस्टिंगली, द रीज़न बीइंग क्योंकि आप कहना ही चाहते हो कि थोड़ा बेसिकली ना योर टोन इज लिटिल रिटोरिकल इन दिस ऐसे, तो रिटोरिकल टोन में ये मर्ज हो गया। यहाँ से आप शायद ऐसा क्लू आ रहा था कि मैरिज इज पोटेंशियली हेवन, वो स्लॉटर हाउस में टर्न हो गया। क्यों हो गया, लेकिन हुआ क्यों, वो वाली टोन यहाँ पर आई है, तो इसलिए बट उतना गलत नहीं लगा जितना हो सकता था when the two ideas are same. But what are the driving forces which are leading to overemphasis or overindulgence in sensory pleasures? In the recent times, media has significantly impacted, किसी ने corrupted करते तो आप और clear होते। Our mental diet या poisoned होता, अगर डाइट है तो डाइट के साथ poisoned और अच्छा लगेगा। Social media apps like Facebook, YouTube, and Instagram objectify women and present them as a sex object. Imagine a 14-year-old boy trying to understand what love or human relationship is through Instagram reels lasting for not more than 60 ये आपको मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुद को पढ़ रहा हूँ। I'm reading myself, so it's good, fine, ठीक है आपका। His perception of relationship will only revolve around superficial aspects mostly linked to sensory pleasures. Good, ये भी ठीक है। आप ये वर्ड लिखते हैं कंस्ट्रक्टेड तो भी अच्छा होता है, कंस्ट्रक्टेड अच्छा वर्ड होता है,
Suppose when we are talking about image or ideas or things like that. Similarly, movies also distort the notion of human intimacy. UN Women created a sexy lamb test and applied it on Bollywood movies. It found that if we replace women in Indian movies with a sexy lamb just as object of attraction, it does not have any impact on the it does not have any impact on the story. Furthermore, psychological factors are also responsible for increased sensuality. Increase देखो बार बार वर्ड आ रहा है. अब कोई ना कोई हमें दूसरा इसका सिनोनिम चाहिए, एज आई वाज एक्सप्लेनिंग यस्टरडे. तो क्या हो सकता है? बहुत हो सकता heightened. है. हाइटेंड, वही मैं सब बोलने वाला था, हाइटेंड या कोई भी इस तरह का वर्ड जो आप इसका सिनोनिम यहाँ पे लिखोगे हाँ. तो अच्छा रहेगा. The cutting throat competition in this globalized world creates stress and isolation. Leisure is considered sin and humans are treated as machines. All these factors can amplify a craving for sensory connections. The increased mm, क्या है ये? Of domestic violence, Incidences. Incidences. incidences of domestic violence during COVID-induced lockdowns. COVID-induced lockdowns can be linked to this. एक्चुअल में आपको कभी समझाने का मौका ना मिलता तो ये सारा मिस हो जाता पॉइंट. In addition to abuse above factors, the rise of materialist and consumerist culture also contributes to heightened sensuality. This the अब heightened अगर यहाँ पे आ गया तो कुछ intensified, लेकिन हर बार आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अपनी vocabulary को थोड़ा सा improve कर लेना. और ये heightened, increased, ये तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, कोई भी ऐसे होगा. तो synonyms अभी लिख लेना, ठीक है? इसी ऐसे के नीचे आप सर्च करके synonyms लिख लेना. The advertisements run by big corporates create an illusion where we start believing that deriving pleasure through indulgence in luxury items should be the ultimate goal of our lives. This takes us away from seeking spiritual or intellectual sensory experiences. The erosion of societal values is clearly evident in today's world and is one of the contributory factors to dysfunctional families, commodified education, and reduced reliance on religion as a source of moral values have created an ecosystem where humans find themselves chained by their desires. Fine. They get desensitized to human sufferings or even worse, derive pleasures from other suffering. This is illustrated by unsettling scenes of crowd gathering around road fights. They gather not to intervene but to record the chaos on their phones and later uploading on social media, hoping it goes viral. Wonderful. Thus, we have seen how sensuality may take away the human aspects of our existence, but does sensuality have an intrinsically harmful nature? Let us explore the answer to this question. Fine. इन हिंदुज़्म थोड़ा मुझे लगा ये वाला एस्पेक्ट थोड़ा और अच्छे से आप लिखते, ये जो ट्रांजिशन है ना Yes, sir. उतना अच्छा नहीं हुआ जितना कि एक्सपेक्टेशन थी. ये जो ट्रांजिशन है. In Hinduism, the Purusharth theory recognizes four goals of human life, which also includes Kam, that is sensuality. The other three, earth, dharma, and moksha. Kam includes not just physical and sexual, but also emotional, aesthetic, and even spiritual dimensions of pleasure. Moreover, it must be pursued in accordance with our dharma. ठीक है, बहुत अच्छा है आपका ऐसे यहाँ पे. Imagine a child feeling soft grass underfoot, or the warmth of a hug, or the texture of sand while playing. All these are also sensual experiences which help them understand the world around them. Similarly, the smell of rain or the sight of young children going to school brings a smile on our face, a sensual joy of being reminded of our childhood days. Thus, one can conclude that sensuality is a natural part of being human. There is nothing fundamentally negative about experiencing sensual pleasures. It becomes problematic only when it is expressed in ways harmful for oneself or others, or when it is pursued in isolation and dharma. When balanced with respect and mindfulness and regard for ethical boundaries, sensuality, instead of becoming a slaughterhouse of humanities, can become
A garden of life can also become a garden of life. चलो ठीक है, ऐसे आपका अच्छा है, इट्स गुड गुड ऐसे, इट कवर्स अ लॉट ऑफ पॉइंट। मैं बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस रिकमेंड नहीं कर रहा, ठीक है। जो चीज़ ठीक जा रही है उसमें मैं बहुत ज़्यादा चेंजेस रिकमेंड नहीं करूँगा। थोड़ा थोड़ा बस जो पॉइंट आउट किया है विद रिस्पेक्ट टू इंडेंटेशन, ओके। अगर मैं आपको इससे का कंटेंट देखूँ, यहाँ पे था तो अच्छा लगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन इज़ गुड, इज एवरेज गुड, स्ट्रक्चर आपका अच्छा है, गुड। फ्लो सब ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है। लैंग्वेज थोड़ा सा एवरेज की तरफ, नहीं एवरेज लैंग्वेज भी ठीक है वैसे, एवरेज से थोड़ा बेटर ही है वैसे। कंटेंट इज़ गुड। ऐसा टॉपिक लिख, ऐसा कंटेंट लिख कर आओगे तो ऑब्वियसली आपको अच्छा स्कोर मिलेगा, ओके। बट जो सिचुएशन थोड़ा बहुत आप और इम्प्रूव कर सकते हो, एक मैंने इंडेंट वाली बात बोली आपको पहले पैराग्राफ में और बाकी पैराग्राफ्स में। ऑल्सो द वर्ड्स विच आर यू आर repeating, they need, you need to find synonyms for them, okay। जो इसका ट्रांजिशन था बीच में, ट्रांजिशन, तो वो ट्रांजिशन मुझे उतना स्मूथ, उतना अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? नॉट बिकॉज इट वॉज completely रॉन्ग, बट it was not up to the level, up to the rhetorical language or up to the persuasive language that you're using in the rest of your essay। उस ट्रांजिशन को पे थोड़ा सा आप और काम करो, कैसे और अच्छा उसे कर सकते हो। और एक आपका जो कंक्लूजन था वो भी मुझे गलत नहीं लगा, बट उतना इम्प्रेसिव नहीं है। आपका ये जो था उतना इम्प्रेसिव नहीं है, कंक्लूजन आपका उतना इम्प्रेसिव नहीं है। अगर वो और बहुत इम्प्रेसिव हो सकता तो सही जाता। लास्टली, सेंशुअलिटी इज नॉट नेसेसरली a wrong thing। आपने जितने अच्छे तरीके से सेंशुअलिटी को क्रिटिसाइज किया, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आपने क्रिटिसाइज किया। यू टॉक्ड अबाउट नेक्रोफिलिया, यू टॉक्ड अबाउट रेप्स एंड मर्डर्स ऑफ a 6 year old 9 year old sort of girl baby। so they were very intense example, वेरी इंटेंस ग्रूसम एग्जाम्पल्स थे वो। लेकिन जब सेंशुअलिटी को जब जब अप्रिशिएट करने की बारी आई, तो वहाँ पे उतना कॉरेस्पॉन्डिंग आपका उसको अप्रिसिएशन नहीं हो पाया। अगर वो उतना ही इंटेंस होता, उतने ही आपने कन्विंसिंग तरीके से बताया होता कि देखो इतना बुरा है और इतना वाइटल भी, देयर इज नो सेंशुअलिटी, नॉट ए सिंगल ऑर्गेनिज्म विल टेक बर्थ ऑन दिस अर्थ, okay। A little baby craves to get to clinch to the skin of her mother, a little baby, newborn baby. This is also sensuality. The touch of the skin of a mother is what saves a baby from death. No amount of machines can replace the warmth which a mother provides to her baby by what we call touch therapy. Organisms would stop being born, forget civilization. Life on Earth will cease to exist within a few years if sensuality is completely derived. The fundamental problem is not in sensuality per se, it is what lies next। ये थोड़ा सा इतना इंटेंस अगर आपका यू टर्न होता तो वो थोड़ा और अच्छा होता, देन यूर ऐसे कुड हैव बीन बीन इवन बेटर। जो अभी लिखा गलत नहीं है, लेकिन उस केस में वो थोड़ा और अच्छा हो जाता वहाँ पे। ये कुछ चीज़ें हैं। मैं आपका ये सोच रहा हूँ कि किसे कैसे ट्रांजिशन को थोड़ा और अच्छा किया जाता है यहाँ पे। यहाँ पे जो ट्रांजिशन है, यहाँ पे आपने बिल्कुल यू टर्न किया है ना। Yes, sir. हाँ। Thus, टुडे वी हैव सीन, thus we have seen how sensuality may take away the human aspects of our existence, but does sensuality have an intrinsically harmful nature? पता नहीं क्यों ये मुझे थोड़ा उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा, या तो शायद ये थोड़ा रिपीटेटिव टोन सा आया। hmm. जो फोकस था वो यहाँ पे था, डज सेंसुअलिटी हैव एन इंट्रिंसिकली हार्मफुल नेचर। Could have I ये added another question, a similar question, but phrased in a different way to lay more emphasis on where am I going in this essay? राइट। और जो आपने रिकॉर्ड्स किया ना उसको सेंसुअलिटी को पॉजिटिव लाइट में पोर्ट्रे करने के लिए, यू फॉल बैक अपॉन पुरुषार्थ एंड हिंदू फिलोसफी एंड द स्लोगन ऑफ धर्म अर्थ काम मोक्ष, इंस्टेड ऑफ illustrating your this idea with the help of some example which is as graphic and intense as those examples with which you had started your essay। That is why I say I see
less of a balance. It is not that maintaining balance is a good thing, and especially see, even though, especially when the essay itself categorically states that sensuality is the slaughterhouse of the humanity, then obviously much of our content should be devoted to produce that effect. We should not be spending too much of our efforts in contradicting this as a topic. But it obviously looks good when you can put up a contrast, and which is as intent, and the more contrast it is, the better your essay would be. Now, when I focus on the conclusion part of it also, uh, then again here ऐसा लग रहा है आपने जबरदस्ती कंक्लूड कर दिया. एक तो एक तो मैंने आपको कहा कैन थोड़ा कैन वर्ड इज ऑल्सो लिटिल प्रोबेबिलिस्टिक, लेस डिटर्मिनिस्टिक, बट स्टिल आप मे को करो तो आप ज्यादा अच्छा है. वन मे या माइट, ठीक है. कंक्लूड दैट सेंसुअलिटी is a natural part of humanity. या आप यूं भी कह सकते थे, thus one might the conclusion might be drawn that it may be difficult to uh, portray sensuality as an evil only. कुछ इस तरीके की लैंग्वेज होती तो थोड़ा शायद ये थोड़ा आपको इस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है Yes, आशीष. sir. Yes, sir. बाकी ऐसे आपका आई थिंक ठीक है. Sir, in the last essay, last two essays actually, in both those essays, you highlighted the issues with the examples, that the examples are not very impactful. So in this essay, I was very careful, especially for the first part, that I use examples which create that sort of picture or which create that sort of impact. But I think, yeah, in the second part of the essay, I did not really, I was not able to achieve that exactly. So, आपने मॉडल आंसर्स का देख लिया होगा सिंचुअलिटी का. yes, sir. ठीक है, सिंचुअलिटी मॉडल आंसर जो मिला था, आई थिंक दिस इज द मॉडल आंसर. तो उसमें भी कुछ एग्जाम्पल, स्टार्टिंग थोड़ा वैसा सही है, ठीक है. इसको हम कल के उसमें कल जब मैं थीम को डिस्कस करूंगा थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके. थोड़ा इसके अंदर जो ग्राफिक लैंग्वेज है, हालांकि मुझे कभी भी लगता है कि ये भी कुछ लोग कहते हैं कि इतना ज़्यादा हमें, जब हम ग्रूसम एग्जाम्पल्स हमें कई बार ग्राफिक तरीके से नहीं एक्सप्लेन करने चाहिए. बट जब टॉपिक ही वो डिमांड कर रहा है आपका, जब टॉपिक खुद ही वर्ड यूज कर रहा है स्लॉटर हाउस, जब टॉपिक खुद ही आपका बहुत नेगेटिवली कर रहा है, तो यू विल ऑल्सो टेक अ स्लाइट लिबर्टी in suggesting those things. ठीक है, तो एनीवे आप लोग एक दूसरे की कॉपी से भी सीख सकते हैं. ये मॉडल आंसर को भी थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है. इससे Yes, बोरो sir. से कर लेना आइडियाज अपने, ओके. सेकंड ऐसे भी लिखो, ओके, अगर हो सके तो. Yes, sir. हम्म, ठीक है, ओके आशीष, ओके. तो सर सर यस, यस सौरभ, सर मैं राहुल। सर वो ओके. ट्रांजिशन में जो आप वो बात लिख रहे थे, वो पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव में के टाइम पे, तो हम्म. उसमें मैथ्यू आर्नल्ड का जो कोट है वो डोवर बीच, तो उसको यूज करके ऐसे ट्रांजिशन कर सकते हैं उसको। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. जी सर। सर उसमें मैथ्यू आर्नल्ड की जो डोवर बीच वाली पोयम है, उसकी एक आध दो अगर कोई लाइन आ जाए तो उसमें यूज हो सकता है ऐसे। जो डिपेंड करता है आप कैसे लिख रहे हो. पॉसिबिलिटी तो है उसको यूज करने की. डोवर्स बीच के जो लास्ट का पैराग्राफ है, अलाउ हाँ लेट सर। लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, कुछ इस तरह की जो लाइंस है उसकी. हाँ 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 सर, दिस वैसे वर्ल्ड ही इज हाँ। फुल ऑफ, जो वाला पोर्शन था, हाँ, तो आप कर सकते हो, एक बार उसको भी कर सकते हो. बट मुझे दिखा देना आप कैसे किया आपने. आपने ऐसे भेजा मुझे ये वाला. नहीं सर, ये तो नहीं लिख पाया था मैं। मेरा मेरा भी प्रिपरेशन थोड़ा कम हुआ है सर, तो अभी एक दो दिन अभी लगेगा अभी। ठीक है. और किसी को ऐसे चेक कराना है अभी सर अपना. मैंने भेजा है सौरभ में। सौरभ, 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 एक सेकंड रुको सौरभ फिर. भेजा सौरभ, आपने ऐसे भेजा है मेरे को, है। जी सौरभ. सर। हाँ जी सर, दोपहर में भेजा। ईमेल किया आपने. यस सर। हैव यू ईमेल्ड मी. यस सर, आई हैव ईमेल्ड यू। लेट मी once again confirm. यस सर। सौरभ, अपना ईमेल चेक करो. prashant@gmail.com। हम्म.
प्रशांत कौशिक @gmail वाला जो है ना आईडी उस नहीं पे नहीं, भेज। आप मुझे एट लीप एसेस पे करो ईमेल, leapessays@gmail.com। आपके इंस्ट्रक्शंस में मैंने मेंशन किया था ना, leapessays.gmail.com, उस पे थोड़ा सा उसे करो। कर दिया अभी जस्ट। ओके, और किसको, एनीवन एल्स जिसको इसे अभी चेक कराना है आप में से? नो सर। सौरभ एक बार बताना आप, जब आपका ऐसे चेक हो जाएगा तो, आई मीन जब आपका ऐसे आप भेज देते हो तो। जी सर, भेज दिया ओके एक बार। ओके, आई गॉट योर मैसेज। ओके, let us start here. Bahadur Shah first was an infamous Mughal king who ruled during 1740s. He abdicated his royal responsibilities to pursue pleasure in alcohol and vulgar dance performances. His reign witnessed steepest decline of Mughal rule due to slaughter and loot of Delhi in the hands of Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali. Despite massacre of the capital, he continued his journey of seeking sensual pleasure. His attitude earned him the title of Rangila. अ, रंगीला था, एक और नाम था रंगीला, दो वर्ड से, रंगीला शाह या रंगीला कुछ। एनीवे दिस गुड फाइन, ठीक है, कंटेंट वाइज। ऑन द अदर हैंड, इन अर्ली 16 ADs नॉर्दर्न इंडिया वाज रूल्ड बाय Pushapati King Harshvardhan. Chinese traveler Yun Seng mentions that he donated all his wealth for the betterment of people. He himself ruled as a monk. His selfless service attitude helped him build a prosperous uh, uh, पुष्यभूति। Pushapati empire. Above two anecdotes underscore how seeking sensuality could lead to devastating consequences for mankind. In contrast, a selfless attitude can bring happiness to the face of many. However, before delving deeper into the slaughtering caused by sensuality, let's understand what the sensuality mean. What is sensuality? ये है ना, डीपर इनटू ये वाला पोर्शन आप हटा सकते थे, ये वाला पोर्शन बस सिंपली यहाँ पे डीप और टॉपिक कर देते हैं, डीपर इनटू द टॉपिक, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द सेंसुअलिटी इज, ठीक है, इस वाली को रिमूव कर देते हैं। यस सर। व्हाट इज सेंसुअलिटी? देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ज्यादा अंडरलाइन नहीं करना। रंजन एक बार सामने आ सकते हो आप, इफ यू इट इज पॉसिबल, अदरवाइज इट्स ओके। इतना ज्यादा अंडरलाइन नहीं करना। इफ यू अंडर इतना ज्यादा अंडरलाइन करोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इतना ज्यादा अंडरलाइन नहीं करना, रिमेंबर दिस, ठीक है। सारे वर्ड्स आप अंडरलाइन कर रहे हो। एक जगह एक पेज पर 3-4 वर्ड्स या 3-4 फ्रेजेस अंडरलाइन करो, उससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज अंडरलाइनिंग का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, बल्कि वो नेगेटिव होने लगता है। व्हाट इज सेंसुअलिटी? सेंसेस आर नेचुरल फॉर एनी लिविंग बीइंग। थोड़ा सा क्लम वो हो रहा है, जगह भर सी रही है। एक दो पेज बचा लोगे तो घर तो ले जाना नहीं है, उसका एरोप्लेन तो बनाओगे नहीं, लेकिन नंबर आप ही कट जाएंगे। तो यहाँ यहाँ पर आके बस अगली लाइन पे शिफ्ट कर जाते हैं। इतना यहाँ पे बिल्कुल बीच बीच के नहीं लिखना, ठीक है। एक सबसे पहले मैं आपको अपने ऐसे पे जो बोलूंगा, एक काम जो आपको करना, फर्स्ट पेज का है आपका, फर्स्ट पेज होना चाहिए था ना। एक थोड़ा सा आपको विजुअल अपील पे काम करना है अपने ऐसे में। ऐसे के विजुअल, अब यहाँ पे फर्स्ट पेज थोड़ा फिर भी ठीक था, सेकंड पेज में देखो किच पिच होने लगा, इंप्रेशन डाउन होने लगता है इससे बहुत ज़्यादा। ओके, ओके सर। sensuality, these are in technical terms responses to external stimuli. Some senses are likable while others are not so pleasing. For example, a cold wind on a sunny day generates pleasurable senses. Sensuality on the other, okay. Sensuality on the other hand means seeking pleasures in deep-rooted, perverted desires. मैंने इस तरीके से मतलब थोड़ा ब्रॉडर
वे में सेंसुअलिटी को इंटरप्रेट किया लाइक हाँ, इससे पहले किसने कॉपी चेक कराई थी शायद सौरभ ने कराई थी किस आपसे पहले अभी। आशीष ने करा सौरभ सौरभ तो आप ही हो, आशीष ने कराई थी। तो अगर आशीष है यहाँ पर मौजूद है तो मैं आशीष को बोल रहा हूँ ये बात, और आपको भी बोल रहा हूँ कि आशीष ने भी अपने ऐसे में, हालांकि बहुत अच्छा मैंने उसे फीडबैक दिया था, आशीष के ऐसे में था फर्स्ट हाफ में ही इक्वेटेड सेंसुअलिटी विद सेक्सुअलिटी। तो वो चीज़ थोड़ा सा गलत थी। सेंसुअलिटी इज़ नॉट नेसेसरीली सेक्सुअलिटी, उसमें और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपके में थोड़ा ये है कि आपने सेंसुअलिटी को थोड़ा और आयाम दिए हैं, थोड़ा और अच्छे से उसे कंसिडर किया है, लेकिन सेंसुअलिटी अपने आप में सिर्फ परवर्टेड नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या आप टेक लेते हो, बट एज ऑफ नाउ लेट मी एज्यूम कि ठीक है जो आप बोल रहे हो वो ठीक है। द डिजायर्स आर परवर्टेड बिकॉज दे जनरेट मोमेंट्री और शॉर्ट टर्म प्लेजर। However, they generally result in greater damage for the other stakeholders. For instance, a drunkard spending all the family savings to quench, ठीक है. Having understood the meaning of sensuality, let's explore how pursuing sensuality corrupts different levels of humanity. मुझे लगता है इसकी शायद ज़रूरत नहीं थी। ये रिपीटेटिव सा होता है, ये कनेक्टिंग जो पैर फ्रेजेस है ना, थोड़ा उतना रिपीटेटिव सा होता है। तो यू सर कैन डायरेक्ट कर सकते हैं नारेट ओके sensuality a bane for mankind. Individuals are often, हालांकि क्लियर कट इसका आंसर नहीं है, मतलब कंट्रोवर्शियल, डिपेंड करता है, लिख भी सकते हो, बट यूजुअली थोड़ा रिपीटेशन उतना मुझे अच्छा नहीं लगता। सेंसुअलिटी है bane for mankind. Individuals are often seen consumed by their desire to pursue what they like, irrespective of the negative consequences it can cause to others. The gambling obsession of Yudhishthir resulted in an attempt to disrobe a woman in a filled assembly. Filled या crowded assembly होता है। देखो युधिष्ठिर कौन था, हिंदी का नेम है, इसे इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा करो, जस्ट टू ओके हाइड, जस्ट टू शो दैट इट इज नॉट अ वर्ड ऑफ इंग्लिश। युधिष्ठिर बहुत फेमस है तो सबने समझ लिया, बट व्हाट इफ इट वाज नॉट सो फेमस mythological character, so in that case it's advisable that you put up that name in inverted commas. Similarly, फैमिलीज families are more and more disintegrating due to lack of love and mutual respect for other members. The root cause are often associated with urge of one family member to impose himself or herself over others. For instance, case of domestic violence founds origin in male desire of supremacy और women। ठीक है, लेकिन ये तो पावर हो गया ना, इसमें उसमें सेंसुअलिटी कैसे कनेक्ट हुआ? लाइक ये ये तो पावर का एग्जांपल हो गया ना। Further, marriages are collapsing because the members are seeking sexual gratification outside marriage. Moreover, at social level, we encounter perversion of values and perception about life. Further के साथ more भी लगेगा, furthermore. Moreover, social level, we encounter perversion of values and perception about life. This leads to member societies running after short-term gratifying, in turn corrupting short-term gratification, in turn corrupting moral standards of the society. This increasing trend, this trending trends of porn addiction among youth is a testimony to this idea. The increasing trend of porn addiction among youth is a testimony to that idea. Additionally, desire to engage in virtual world is causing increasing enhanced screen exposure and mental health issues among the youth. But the brunt of this sensual gratification is borne by the society in terms of social capital loss. Moreover, देखो अब एक बार मोरेवर लिख दिया ना, बाबा मोरेवर मत लिखो, दो मतलब तीन ज्यादा बार नहीं लिखना है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, कुछ मत लिखो, ठीक है। अभी फ्लो बना हुआ है आपके ऐसे में, अब यूं नहीं है कि हर पैराग्राफ को के शुरू में हम लिखेंगे। वो जो कल मैंने आपको बताए थे सारे वर्ड्स यूज करने,
थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करना है, ऐसा नहीं कि हर पैराग्राफ से पहले हमारा एक कनेक्टिंग वर्ड्स होना ही चाहिए, बीच बीच अच्छा, में हमें उसे स्प्रिंकल करना है। In many societies, dominant groups have the what is this? proclivity. Proclivity forwards asserting its dominance over the minority and vulnerables. It could result in social injustice and into civil wars in extreme cases. लेकिन ये फिर Sir, पावर आ रहा है ना, आप पावर और डोमिनेंस, या तो आप यूं बोल रहे होते कि दिस पावर एंड डोमिनेंस इज टू गेट ग्रेटर एक्सेस टू sensual gratification. This contest of power is for seeking greater sensual pleasure. अगर आप ऐसा प्रूफ बोलते तो एक बार को माना जाता, बट ये ऐसे तो आप पावर एंड डोमिनेंस पे जा रहा है आपका ये वाले कंटेंट, फिर से पावर के ऊपर जा रहा है, तो ये उतना रिलेवेंट कंटेंट से वाइज नहीं लग रहा। On similar lines, nation states are grabbed by their founding desire to pursue selfish national interest goals. grappled. Mm. Actually. By their unfounded desire to pursue selfish national goals, it has created an arena of conflicts and wars globally, rendering vulnerables to life. लेकिन एसेंशुअलिटी से कैसे ये लिंक नहीं हो पा रहा दोस्त, ये सारे आर्ग्यूमेंट आपके उतने स्ट्रॉन्ग नहीं आ पा रहे टॉपिक से रिलेटेड। आपने तो सेंसुअलिटी को थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ ठीक डिफाइन किया था, बियॉन्ड सेक्सुअलिटी भी देखा था, तो आप तो उसे और भी तरीके से कर सकते थे, एक्सप्लोर कर सकते थे। आई थिंक सर लिखते टाइम मैंने बस सेंसुअलिटी को परसुएंस ऑफ डिजायर से रिलेट कराया. That what gives us sensual pleasure if we pursue our desires. So in every paragraph I tried like uh, someone is trying to pursue their desire, so that's how it leading to like sensual gratification for that person. तो सेंसुअलिटी इज परसूट ऑफ डिजायर्स as long as those desires are sensual desires. Sensuality is pursuit of sensual desires. ऐसे तो फिर आपको कहो, अगर सपोज मुझे मॉन्क बनने की डिजायर हो, तो क्या फिर ये भी सेंसुअलिटी में आ जाएगी? And then I mean it has to be uh, The desire should also be in some way linked to sensuality, right? yes. लेकिन मैंने एक पैटर्न देखा है ओवर द इयर्स, इस टॉपिक में बहुत से लोग इसको डोमिनेशन और पावर से रिलेट करते हैं। इट इज़ नॉट यू अलोन, ठीक है। इनफैक्ट लास्ट लास्ट ईयर, आई थिंक, या लास्ट ईयर, one of the student, last to last year I think, or last to last year I think, one of the student who got 145 or 146 marks, I think Katyani, she used to write very well, but in this particular essay she scored 145 something marks in essay. उसने उन्होंने भी उसने भी यही सेंसुअलिटी को पावर से रिलेट किया था, आई रिमेम्बर। तो ये कॉमन चीज़ है, सब कईयों ने किया है, बट लेसन यू शुड टेक, थोड़ा सा डिफाइन थोड़ा ठीक से करो अपने माइंड में। और देखो, एक डेफिनेशन वो होती है जो हम लिखते हैं पेपर पे, और एक डेफिनेशन वो होती है जो हमें समझ में आ रही होती। दोनों डेफिनेशन एक हों तो बेहतर है, लेकिन कभी कभी डिफरेंस होता है, लेकिन हमें समझना चाहिए। अब डिफाइन करते वक्त तो हम इतना उसे एक्यूरेट तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते, वी कैन जस्ट गिव ए लिटिल आइडिया अबाउट व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय सेंसुअलिटी, बट लिखते हुए तो हमें पता है ना कि सेंसुअलिटी मतलब ये चीज़ें होंगी। Mm. So be more guided by what you actually understand by that word. Also, narrow national interest imperatives of nation states, especially the developed world, has pushed them away from taking common but differentiated responsibilities towards climate change. But who will bear the consequences? Answer is vulnerable poor throughout the world, as climate change fade to affect the poor more than others. Very beautiful point, very wonderful point. I think no one would have thought of it.
कि how you are relating sensuality to climate change. And it's a wonderful thing but you have done that in a wrong way. इसको अपने पावर के थ्रू एक्सप्लेन किया इस वाले पॉइंट को। पावर Okay. डायनेमिक्स में आप चले गए, जियो पॉलिटिक्स में चले गए, कॉमन डिफरेंशिएट परसेंटेज उसमें चले गए। इतने अच्छे पॉइंट को आपने लूज कर दिया। अगर इस पॉइंट को ऐसे करते कि परसूट ऑफ फिजिकल कंफर्ट्स एंड डिजायर्स it is pushing us to for greater emissions, and climate change crisis is evolving faster than faster than ever. Wildlife are losing their life for the sensual pleasure of a crocodile skin's purse. We have almost threatened animals like them on the verge of extinction. ठीक है, तो या फिर आइवरी से कैसे आइवरी वाज लिंक्ड टू, या ऑल दिस पोचिंग इंडस्ट्री बेसिकली। इट्स अ वंडरफुल पॉइंट योर थॉट, आई एडमायर यू फॉर दिस कि अपने क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज या फिर इससे रिलेटेड अब जैसे मैं वो सोच पा रहा हूँ वाइल्ड लाइफ का क्राइसिस कैसे इट कैन बी लिंक टू सेंसुअलिटी। इट्स अ वंडरफुल वे, बट इतना आपको जीएस की तरह उसे पॉलिटिक्स डायमेंशन गवर्नेंस डायमेंशन से लिंक करने की जरूरत नहीं है। आप उसे जनरल पॉपुलेशन की बात भी तो कर सकते हो ना। हम ह्यूमैनिटी का टॉपिक में वर्ड्स हैं, ह्यूमैनिटी, स्लॉटर हाउस, तो टॉपिक में जरूरी नहीं है कि आप गवर्नेंस वाले एस्पेक्ट्स को भी लेकर आओगे। So far, we have seen how at different levels of human organization, selfish sensuality can be devastating. It is also seen that different walks of human life faces similar virtues. Firstly, politics in modern day has seen rise of polarization. अरे नहीं यार, you're deviated from the topic. आप टॉपिक से track, you lost the track. Secondly, economic imperatives of capitalism require producing more and more profit. The selfish, sensual pleasure of profiting has reduced human beings to more consumers. बात सही है, नहीं नहीं, ये वाला पॉइंट ठीक था यहाँ पे, बट ये सेल्फिश सेंशियल प्लेजर ऑफ प्रॉफिटिंग थोड़ी ना है। वो तो प्लेजर सेंशियल प्लेजर ऑफ पॉपुलेशन है। प्रॉफिट ईयर्स और कैपिटलिस्ट दे आर जस्ट कैपिटलाइजिंग अपॉन दैट। हो सकता है मुकेश अंबानी घर में उतने अच्छे से कुछ एंजॉय ना करता हो सेंशियल प्लेजर्स को, वो तो जस्ट हमें प्रॉफिट ले रहा है। ही इज अ कैपिटलिस्ट जस्ट मेकिंग अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट। वो हम लोग हैं जो उसके हमें कपड़े और बाकी चीजें चाहिए सेंशियल प्लेजर्स के लिए। नहीं, आई थिंक आप टॉपिक से भटक गए। नहीं, आई यू डिबेटेड अ लॉट। लाइक बुद्धा के बात का आपने करी, लाइक वाइज स्ट्रॉन्ग एथिकल फाउंडेशन कैन बी बिल्ट बाय राइट सोशलाइजेशन, वैल्यू ड्रिवन टीचिंग एट होम। ये देखो, मुझे इतना ये सारी चीज़ें ना बहुत मैकेनिकल लगती हैं। ये बहुत स्टूडेंट्स लिखते हैं, आई डोंट यूजुअली आई एम ए फैन ऑफ सच मैकेनिकल जीएस काइंड ऑफ आंसर्स। क्या करना चाहिए हमें टीचिंग में कराओ, क्या आंसर क्या करना चाहिए गवर्नेंस में, कोर्स शुरू कर दो, एक ये कर दो, एक ये कर दो। वो बड़ा जीएस टाइप अप्रोच होने लगता है। ठीक है, Yes. देखो, आप आप इशू को डिस्कस करो, ये साइड डिस्कस करो, वो साइड डिस्कस करो, वे फॉरवर्ड या रेजोल्यूशन में एक आध पॉइंट्स लिख दो, बहुत है। आपको वो समस्या को सॉल्व करना नहीं है। वेदर स्लॉटर हाउस है कि नहीं ह्यूमैनिटी में, ठीक है, हम वे थोड़ा लिख देंगे आगे क्या करना चाहिए, प्रोवाइडेड वो बहुत ही नेचुरल और ऑर्गेनिक आंसर है, मैकेनिकली सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। सौरभ, बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिल रहा है, माइंड में आ रहा है तो लिख दो, नहीं आ रहा तो जबरदस्ती मत लिखो। समझ रहे हो, इसी तो जबरदस्ती वो तो जीएस में एक वैल्यू ड्रिवन को टीचिंग ये जीएस के आंसर्स में लिखा जाता है हर बार। यहाँ पे थोड़ा ऐसे में जबरदस्ती लग रहा है।
नहीं नहीं, और ये एक पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर को इतना वो मत करना, गवर्नमेंट को कर सकते हो अप्रिशिएट, पार्टी या लीडर को उतना मत करना, थोड़ा सा अवॉइड करना। यू नेवर नो कौन कॉपी चेक कर रहा है। Therefore, with due efforts, I think too many solutions. मैं आपको बात लिखूंगा, too many solution. Don't spend too much of your efforts in suggesting solutions unless someone has asked you to do that. The topic is of this nature where they are expecting you to come up with solutions in a very direct manner, then do so. If not so, then there is no compulsion for you to spend your time and effort in writing down solutions. Subsequently, at this level, therefore, with due efforts, poetry desires can be curbed. It is our choice then whether to let our sensuality dictate our choices like Bhadu Shah Rangila or defeat our desire to serve mankind like ठीक है। एकदम से एंड हो गया, मुझे लगा एक दो पेज और आएंगे अभी, बट इट्स ओके। ठीक है, एंड हो गया। इट्स गुड दैट यू मेड ए कनेक्शन विद द इंट्रोडक्शन, दैट इज अ गुड गुड थिंग। मुझे आपकी चीज़ अच्छी लगी कि इंट्रो एंड कंक्लूजन जो है दैट इज लिंक्ड, इट इज ए गुड थिंग, दैट्स यू डन इट। बट इस ऐसे में आई थिंक यू स्टार्टेड ऑन अ गुड नोट। Example of Muhammad Shah Rangila and juxtaposing him with some aesthetic king like Harshvardhan was appreciable. And then you thought of sensuality as deriving pleasures in different ways. That was also good. But soon after you deviated when you started talking about power, and even more you further deviated when you made pursuit of power as a central theme of your essay. So in those segments, it sidelined. The content could have been better and more focused. Also, remember this thing, sensuality is not equal to sexuality. Sexuality or sexual desires, they are just a subset of sensuality. They are a subset of sensuality. They are only a subset. They are not, besides them, sensuality can mean a lot of things. Even the desire to listen to good music, the desire to feel good weather, good air, all these things are also a part of sensuality. Especially in literature, we often say so. Like there used to be poets who used to go to, like Keats, he is considered to be sensual pleasure because he's talking about senses. Sensuality here means senses. So whatever pleasures you can get out of these five senses, whether it is because of ears or nose, smell, fragrance, and all these things, it all comes under sensuality. So in those aspects, you could have explored more ideas. But I will not analyze too much of this essay on the basis of content alone. Content, for more content, you can obviously have a glimpse of the model and essay answers, and more so I will discuss this tomorrow or in the next session. But when it comes to a presentation style, one or two things that I obviously have to remind you, or I can point it out. One thing is underlining too much is straight away no. Visual appeal you have to work on. Do not make it so claustrophobic as you have done it here. Okay. And too much of a way forward is not something that I would advise you. Any way forward or solution or ethical dimension which comes naturally to you can include that. So just one question here. Hmm. So I think I agree with you that I have made an error in I have tilted more towards power to uh, power that has powers like exercise of power leading to harm towards others. Hmm. So in my mind, there was some in every aspect there was some sort of sensual pleasure that the doer was deriving. So had I explicitly mentioned it, would it have been better or more close to the topic? For example, if I say that अभी सामने जो पैराग्राफ है कि like, like the corrupt people or
Yeah, like the youth, these days youth are more addicted to porn, so they get some sort of like sensual pleasure there. Or for example, there is a corrupt leader. He has greed for money. That satisfaction of that, like satisfaction of that greed gives him sensual pleasure in some way. So, would that have been okay, or is it still too far from the topic? I think it would have been a decent attempt to bridge the gap. So it could have helped the matters. But still, something which is deviation from the topic or wrong interpretation, it would continue to be so. It would lighten the impact, it would bridge the gap, but it will not completely resolve the issue. But because what I'm more concerned is for every example related to power, if you are mentioning, and in every case, suppose you say that, see, with the help of power, a person would get greater access to ways to gratify his senses. And that is why this is related. So constant repetition of this link itself is an issue. How Okay. constant once or twice it's okay, but if you do it three, four times as the need would have been in your particular case, then it would have been an issue. But one more way around for this could have been somewhere in your essay you could have said that what you could have said, for example, in two, three lines you could have added when you were migrating to power. You could have said that sensuality is itself a power. It's itself a niche problem. But sensuality, pursuit of sensual desires or obsession of sensual desires also invites or also urges a person to pursue power and dominance over others. And then this power and dominance and exploitation and wars and conflicts, they create even further nuisance or problems in the society, as we see in those particular instances that you have seen mentioned. Okay. Then two, three times those examples could have been linked. But again, too much of excessive uh, content of power would still be off track because fundamentally that is not the core idea of the topic. But okay, at least that could have set up the context. But um, too much of those discussion would still be considered off track. But yeah, वो लिंक आपका हो जाता है वहाँ पे. I see. Or ideas, thoda, I was also short of ideas because I haven't been I haven't read much about or thought much about sensuality per se. So काफी narrow sense में उसको देखते हैं, like majorly in terms of sexual desires or greed sometimes maybe, or like desire for some material greed. उसके अलावा शायद ही. Yeah, so I know this thing, and that is why also one reason that why this as topic was introduced कि आपको यहाँ से थोड़ा सा points मिल जाएं which you may be able to pull up or retrieve on topics that may be something else, but still you may see this topic would help you understand. As I'm setting this topic, basically it also introduces to this broader theme of what humanism is. What do we say humanism? A lot of people think humanism is all about morality and virtues. Not necessarily that the case is. Humanism is also about acknowledging that human being consists of certain desires. So while on the one hand we are constantly talking about morality, about spirituality, about virtues, about duty, and so on, somewhere we drift the focus away from the desire that a human being holds. Is the desire of intimacy, or is the desire of love, or is the desire of even physical intimacy or sexual desire, are they fundamentally anti-human? Have they not been introduced to human being by the very nature whom we worship? So when you're talking about naturalism and humanism, we have to understand that we should also bring into center stage the weakness, the desires, and all these aspects of a human being. Humanism is not necessarily talking about courage and morality and ethics and spirituality and religion and so-called great virtues alone, but also about small little things of life which make us human.
So this is what I would be rather focusing more tomorrow or in the next session. But with the help of this statement, I think you would be introduced to this idea. And somewhere the intention is that, see, we quite often glorify the idea of rationality in UPSC preparations, especially those people who are coming from GS background and from governance and sciences. What's your discipline, Saurabh? Hmm? Mathematics. Mathematics, yeah. So mathematics is the purest expression of reason. Mathematics is the language of reason. There's no other discipline which comes close to reason as much as mathematics does, possibly. So when we talk about reason, when we talk about rationality, we somehow forget what a human being originally was. And UPSC, it quite often constructs this opposition between two different sentiments, rationality on the one hand and something else on the other side. So sometimes it comes up with this as a topic like history of human being is the struggle or war between romanticism and science. By science, they mean rationality here. Or sometimes they come up with an essay topic, real is rational. Sometimes they come up with an essay topic related to thinking and so on. In all these segments, when we are having a discussion on rationality, we must also know what is opposite of rationality. And the opposite of rationality is what we call humanity and this humanism. And to understand that, it is important to understand that human being consists of desires, emotions, love, and all these things. Weaknesses also he has. Let us appreciate those things also. So, so one more question. The problem I am facing is like uh, if I have an idea, I generally come up with examples or substantiating. But what is my issue is I generally run short of ideas. For example, in this essay, I did not have more ideas about sensuality. Like one or two things only that I told earlier, which you Mhm. can, I mean, read through it. It's quite apparent that I could relate only it with sexual desires and power dynamics. There was nothing much beyond that. So, how to like improve on that part? So yes, what you said so far is that you suffer of from this problem of lack of content sometimes, which you witness in this particular essay also, or lack of content. Ideas like, for example, uh, if you give me an idea how to relate a meaning of sensuality, I can come up with some content to substantiate that or back that up. Okay, Saurabh, I would come up with a very simple trick here, very simple answer to what you said, and it will be quite influential also in helping you out. I assume that you have sort of interpreted those terms in a proper way. I assume this thing on in the essay topic, whatever has been given to you. Let us assume that you have interpreted that meaning. At least you know the meaning of the word that are used in it. Okay, let Okay. us assume that thing. Suppose whatever interpretation of word that you have taken up. Suppose here this issue was the topic here was about sensuality, and whatever howsoever you have interpreted it. Okay, now you have to whatever interpretations you come up with it with that word or that idea. One of the best ways to generate content and one of the best ways to generate ideas is to look around yourself. That's the best way. Just close your eyes, think what happened to you previous night, whom you talked to 2 3 days ago, who your friends are, someone in your relatives, someone some movie you saw recently, some news you came across recently. Are they talking about anything related to it? Especially people who are in your vicinity. And from their lives, we can borrow some ideas, then we can eliminate those people. We don't need to talk about those people and those relatives or friends or colleagues. We can just construct those ideas, build on those ideas, and we can say, okay, this can also be an aspect of this topic. This can also be an aspect of this topic. This can also be an aspect of this topic. You must be around 25-year-old, I think, at least 25, 24, 25, 26. I think so. 29, sir. 29, okay, pretty good. The more the better.
So yes, you have spent 29 years on this planet. Okay, I think out of which 20 to 22 years, uh, you remember what have happened in last 20 years of your life, roughly. 20 years, life has shown you a lot of things, and from your own personal life, and from the life of your friend, family members, you have lot of content, lot of ideas. It is just that you need to think of them. Don't don't refer to books. I mean, don't when the topic is given to you, don't think, okay, where was in which particular context did I read about this term? Oh, which chapter was there where I read about sensuality? Who was talking about it? Which particular chapter was there was a discussion of rationality? Who was talking about rationality? Rene Descartes, this. Not, don't be limited by that. Fall back upon your own life. You must be, you might be, or like most of you would be having a parent, a pair of parents, like your mother and father. Have you ever seen a discussion taking place between your father and mother? Out of those hundreds of discussions or fights or quarrels or kind of dynamics that happen in Indian families and Indian brown families, can't you find some examples to illustrate how rationality operates, or create some issues, or how it is helpful, how it is not helpful? This this happens, this you can apply on any topic, on most of the topics, because most of the UPSC topics are very general in nature, and they deal with human aspects of our existence. And to understand the human aspects of our existence, the best laboratory, the best resource books are humans themselves. You don't necessarily have to refer to some books where you read about some theories. This thing, do it in the next essays. You will definitely find some three, four more examples or ideas you will be definitely able to generate. Apart from that, the essay test series that we are going to continue, they would also be giving you some ideas, and this whole library of ideas that you would have you will possibly not fall short of ideas when you're writing the final essay paper. This is something that I can quite confidently say so. Okay. Yes. Okay, sir. Thank you. Okay. So anything else? Actually, sir, if I can discuss it a bit freely, Hmm. if you can spare me 5 more minutes. Yeah, Sorry. sure. So मेरा शायद सोचने का तरीका ऐसा है कि when I see a topic, something there, I have an image in mind of that particular thing. The second thing I do is I think of an example. उससे रिलेटेड मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आता है, देन फ्रॉम द एग्जांपल आई ट्राई टू जनरेट आइडिया. तो इसमें हो क्या जाता है कई बार कि मैं आइडिया के नाम पे बस एग्जांपल लिस्ट कर रहा होता हूँ, तो वो भी एक इशू है. खैर, मैं नेक्स्ट आपने जो चीजें बताई है मैं नेक्स्ट ऐसे में ट्राई करता हूँ, देन आई विल डिस्कस विथ यू. Yes, yes, you should try that. और एग्जाम्पल के बेसिस पर आपने कहा कि आप लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स जनरेट करते हैं. Is this what you said? यस, मतलब जैसे मैंने अभी sensuality, just for example, sensuality say slaughterhouse. So I have a constraint in mind. Sensuality leads to certain consequence of sensuality leads to slaughterhouse. Then I will have like uh, I will think of many examples where there is a slaughterhouse means negative consequences, blood spilling all over or things like that. And I will have those examples in my mind in different domains of human life, and then I'll try to generate ideas from there. सो उसमें अभी जैसे हुआ क्या इस ऐसे में कि मैंने अलग अलग एस्पेक्ट्स में डोमेन्स में एग्जांपल सोचे, बट while writing I sort of missed to relate it with sensuality. वो रिवर्स इंजीनियरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया. So I have to think it the other way around. First think idea, then example. Probably that might help. राइट, राइट. तो देखो, बहुत ज्यादा, लेकिन स्ट्रिक्टली इसको इसको वो इसमें इसको एल्गोरिथम बेसिस पर मत जाओ, ठीक है सौरभ? थोड़ा ह्यूमैनिटीज के एसेस हैं, तो ये दे आर नॉट नेसेसरली ड्रिवन एंड दे कैन नॉट नेसेसरली बी एक्सप्लेन्ड इन द टर्म्स ऑफ एल्गोरिथम्स. ये लिंक्ड लिस्ट की तरह, आप शायद लिंक्ड लिस्ट की तरह काम कर रहे हो, या फिर आप एक मैश वे में
आइडियाज को कनेक्ट कर रहे हो या आप एक रैंडम वेरिएबल इंसर्ट कर रहे हो। तो किस वे में हम एग्जाम्पल्स को बिल्ड कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ये डेफिनेटली एक एल्गोरिथम के बेसिस पर नहीं किया जा सकता। हाँ, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, ब्रेनस्टॉर्म करोगे, तो आपको खुद थोड़ा सा कुछ आइडियाज दिल से भी, कुछ आइडियाज कुछ कुछ एक हैफजेड वे में भी आने लगेंगे, कुछ आने लगेंगे चीज़ों को। माइंड क्लटरिंग एक फैक्टर तो है डेफिनेटली। हाँ, तो आपका ऑप्शनल फिर ऑप्शनली आपका यही मैथमेटिक्स से है? यस सर, मैथ्स ऑप्शन, मतलब मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और मैथ्स ऑप्शनल बैकग्राउंड आपका इंजीनियरिंग कहाँ से किया आपने? है। मैंने आईआईटी बॉम्बे से आईआईटी बॉम्बे से, किस सब्जेक्ट में? किया, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी। मटेरियल साइंसेज एंड मेटलर्जी। यस सर। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। आईआईटी बॉम्बे पवाई, पवाई में नहीं, ये कहाँ पर है? इट्स इन पवई, यस सर। पवाई, वंडरफुल, वंडरफुल। चलो ग्रेट। तो आप आपको स्पेशली बेनिफिशियल रहेगा आपका थोड़ा सा इस डिस्कशन को देखते देखते, कैसे ह्यूमैनिटीज़ में बातें करते हैं हम लोग, थोड़ा सा एब्सॉर्ब इनसे चीज़ों को करना, तो आपके ऐसे और अच्छे निकल कर आएंगे, ठीक है? सर चलो कीप राइटिंग, ओके। थैंक यू क्लासेस सर। ठीक, क्लासेस ठीक जा रही हैं? हाँ हाँ जी सर। ठीक, कोई पर्टिकुलर ज़रूरत हो प्रिपरेशन से रिलेटेड, कोई टॉपिक या कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे मैसेज कर देना। आई विल टेक अप दैट इन क्लासेस ऑल्सो, ओके। सर ये थोड़ा ऐसे का पता नहीं, फॉर सम रीजन मुझे लग रहा है कि इट्स वेरी एल्यूसिव, और मे बी आई हैवंट ट्राइड मच क्योंकि ऑप्शनल में काफी बिजी था पिछले कुछ टाइम से। तो अभी ऑप्शनल का थोड़ा सॉर्ट आउट हुआ है, तो फॉर नेक्स्ट 1 मंथ आई बी मोस्टली फोकसिंग ऑन essay and some time on GS. So ओके। प्रैक्टिस के साथ बेटर हो, इम्प्रूव हो, आई एम होपफुल। प्रैक्टिस प्रैक्टिस से डेफिनेटली बेटर होगा। आप ये चीज़ भी देखोगे कि बहुत बार जो हम एग्जांपल्स ले रहे हैं वो अलग अलग एसेस में यूज़ हो रहे हैं। अब एक पैटर्न देखने लगोगे, तो जब यस आप, सर। ठीक है, आप वो पैटर्न देखने लगोगे, फिर आप बार बार लिखोगे तो कुछ वोकैबलरी आपकी बिल्टअप होगी। जो जो देखो, एक चीज़ और करना, जो इन ऐसे में जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये वाले वर्ड के लिए मैं और अच्छे से इसको बोल सकता था, उस वर्ड को कहीं कहीं अपनी डायरी में बना के लिखते रहना। एक छोटी सी डायरी एसेस के लिए ज़रूर बना के रख लेना, ठीक है। उसको फिर ये चीज़ और बता रहा हूँ आपको, आपने मेंस दिया है इससे पहले? हाँ जी सर, ये मेरा तीसरा मेंस होगा। तीसरा मेंस है, तो ठीक है, आई होप बढ़िया चीज़ें रही आपके पास। आप जी। फर्स्ट ऐसे में अच्छे स्कोर थे, मतलब डिसेंट थे, मतलब 126 थे फर्स्ट टाइम। हम्म सेकेंड टाइम अराउंड बहुत पुअर हो गए, लाइक 76 6, there's a 50 marks drop. हम्म। This is third time, so This is their time. So hope you bounce back and you bounce back with an even further impressive score. ठीक है, अच्छा रैंक लेकर आओ आप। जीएस से भी मेहनत करते रहो, ऑप्शनल में अच्छा स्कोर बनाओ, एसए में थोड़ा सा मेरे पे ट्रस्ट रखो, थोड़ी अपनी मेहनत करते रहना, ठीक है। विल डेफिनेटली it's प्रोबेबली गॉड विलिंग। working on regularity in writing essays, which I हाँ, will rectify ठीक है, जो in. भी मैं चैनल पे एक टॉपिक देता हूँ, कभी भी टॉपिक देता हूँ चैनल के ऊपर, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उस टॉपिक के ऊपर भले ही आप एक दो पैराग्राफ लिख दो, बट डोंट लीव एनी टॉपिक अनअटेंडेड, नेवर, इवन 5 मिनट्स एंड 10 मिनट्स इज स्पेयर। टॉपिक जितने ज्यादा ब्राउज करोगे ना माइंड में, उतने ज्यादा आपकी लिंकिंग बन पाएगी फाइनली, ये याद रखना बस, Okay, ठीक है। sir. चलो, Like ओके। one two page of brainstorm, one हम्म, two page brainstorm on topics that you gave and on PYQs also. राइट, Okay, sir. ठीक है, ओके। So सो विद दिस आई thank विल you for क्लोज इट।